How are you, sir? A question students ask almost every day, and we always gave the same simple answer. We are good. But if they asked us that same question today, we might pause before answering. Time moves strangely in school. The days feel long, the classes feel endless, and the final bell always feels too far away. But one day, you look back and realize those same days became the most beautiful memories of your life. And sometimes, all those years come together in a single moment. That moment arrived on 3rd of February, the day our class 10 students said, Good morning. Have you not taken your breakfast? Say loudly, na? Good morning. Okay, as we are running late, so we start our program in a few lines. Like every ending marks a new beginning, but every goodbye carries the promise of a brighter tomorrow. Respected principal sir, esteemed teachers, and my dear students, a very warm, heartful good morning to everyone present here. I, Ravi Bush, your host, take this opportunity to warmly welcome our principal sir, whose vision and guidance always been a source of motivation for the entire school family. And a very special welcome to our dear students, the pride and future of this institution. Dear students, as you prepare to step into a new chapter of life, remember that success is not defined by any achievement but character, integrity, and perseverance. Have faith in your abilities, stay curious, never afraid to dream big. Let challenges strengthen you and let failures teach you resilience. This farewell is not a goodbye but a reminder that this school will always remain your second home. Wherever life takes you, carry forward the value you have learned here and continue to make us proud. To begin this auspicious program, I now request our respected principal sir to kindly come forward for the lighting of the ceremonial lamp symbolizing knowledge, hope, and enlightenment. Good morning, respected principal sir, teachers, and my dear friends. Today is not just a function, it's a collection of memories, emotions, and dreams. Good morning, everyone. Yes, today we are here to celebrate friendships, achievements, and beautiful journey of class 10 as we bid them a heartfelt farewell. What better way to start than with energy and excitement? एनर्जी का फुल डोज लेने के लिए आर यू ऑल रेडी?
Because class 9 is coming with Punjabi swag and Bollywood tadka. Let's welcome them with a big round of applause. हटो हटो हटो, हमें बहुत जोर से साजन साजन आ रहा है। तुझे जो भी वादा दिया तुझे मैं वो वादा निभाऊंगी, मैं वो वादा निभाऊंगी साजन। जय जी ए वाला नहीं ए वाला करो। चल जिंदू आवे चल शहर बाजारी विकदे ने जिथे रुमाल, शीशा ते सुर में दानी ते मिलदा मुफ्त सुरम चूनाल। वे मुल टाइयां ने वे कुल टाइयां ने वे मुल टाइयां ने वे कुल टाइयां ने, मैं क्या सुरम सलाइयां मैं अज अखां च पाइयां, मैं क्या सुरम सलाइयां मैं अज अखां च पाइयां। नीक तेरे पैर दी झांजर पुकारे रांझण रांझण, नीक तेरे पैर दी झांजर पुकारे रांझण रांझण, नी मुंडियां नूं नच लैण दे सोहणीए अजे ना जा, नी अग वांगू मच लैण दे हीरीए अजे ना जा। कदे हू करके कदे हार करके, कदे हू करके कदे हार करके, घेड़ा दे दे नी मटियारे लंबी बाल करके, घेड़ा दे दे नी मटियारे लंबी बाल करके, घेड़ा दे दे नी मटियारे लंबी बाल करके। काला सूट पाके नी तू अग लगदी, थोड़ी नोटी लगे थोड़ी ठग लगदी, नाग बाल खांदी तेरी गुੱਤ बदलो बीकानेर तो ले आंदी तू गड़क लगदी। फुल्लां वाले जੱਟ पैने करते सलावां तैनूं पट्टणे दी करते तैयारी, ओ मिन्ना मिन्ना पब्बां उत्ते पौंदी भंगड़ा वे कुड़ी जੱਟ ਨੂੰ पट्टण दी, मिन्ना मिन्ना पब्बां उत्ते पौंदी भंगड़ा वे कुड़ी जੱਟ ਨੂੰ पट्टण दी मारी, मिन्ना मिन्ना पब्बां उत्ते पौंदी भंगड़ा वे कुड़ी जੱਟ ਨੂੰ पट्टण दी मारी। Ladies and gentlemen, you are not ready for this. ਨਾ ਦੇ ਦਿਲ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਿਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਨਾ ਦੇ ਦਿਲ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਿਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਨਾਲ ਰਜੇ ਤੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋਗਣ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। Get ready. I'm a king, but I pop to my saint. They call me a bad man, that's a fucking good thing. Mama said swing back when another man swings, so I make my mama proud and they make their heads ring. Father, forgive me, I can't forgive them. You know my history, you know what I did then. And what I do now, a whole lot worse. Heavy is the head, it's a blessing and a curse. चिपक चिपक के चलती है कभी कभी तो राहें, जुड़े जुड़े कुछ ऐसे के लगा हो जैसे दम, डबल डबल होती थी जो कभी कभी तकलीफें, किसी के संग में चलने से हुई हमसे कम। ओ तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा 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 तेरा किस्सा तिरंगी, कभी कभी चलती है कभी कभी रुकती कहानी बेढंगी। कश्मीर में तू कन्याकुमारी, नॉर्थ साउथ की कट गई देखो दूरी ही सारी। कश्मीर को मैं कन्याकुमारी, 50-50 हर सिचुएशन में हिस्सेदारी। Our next performance is a beautiful dance by Class 10, Group 1, expressing joy, friendship and unforgettable school memories. पहले दिन से आखिरी दिन तक का सफर कैसे होता है, आइए देखते हैं। फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। अंक दौड़ी दया तू हम नन्हे बालक है, अंक दौड़ी दया तू हम नन्हे बालक है। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ABCD। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है मैडम जी, सुनो। A for Android, B for Bluetooth, C for chat, D for download, E for email, F
धन्यवाद। बच्चों, कल मैंने जो आपको निबंध दिया था, मेरी आंखों देखी पहली बारिश, वो मुझे कौन सुनाएगा? मैम मैं। आज पहली बारिश हुई। तुम आगे हो? हर 10 मिनट बाद देखा, तब भी बारिश चालू थी। हर 1 घंटे बाद देखा, फिर मैंने 2 घंटे बाद देखा। कैसे बारिश बंद हो गई। हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, थोड़ा और बिगड़ेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। Good morning students. Your final exam will start from 6 September. Be prepared. प्रेशर कुकर जैसे सर की बच जाए ना सीटी, तब तक मार रट्टा मार, ओ पटक पटक के सर गिरा दे नॉलेज की दीवार। रट्टा मार, चढ़ जाए जो बुखार कॉफी से तू उतार, खिंच खिंच के भेजा कर ले तेज धार यार। रट्टा मार, Attention class. Last 15 minutes remaining for the exam. Harsh, exams are over. हमारा ये वक्त हमारा जो एक बार गया तो आए ना दोबारा, समझ लो जरा ये हवाओं का इशारा मेरे यारों। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। 90s के गाने सुनते ही पेरेंट्स खुश हो जाते हैं और साउथ इंडियन बीट सुनते ही पैर खुद ब खुद हिलने लगते हैं। लेट्स एंजॉय दिस अमेजिंग कॉम्बो बाय क्लास 9। फोटो में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात जो दुहाई है दुहाई। फोटो में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात जो दुहाई है दुहाई। अरे हाँ, बात जिसमें प्यार तो है, जहर भी है, हाय। सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। मैंने तेरी यादों के जुल्फों पे लगाए, मैंने
పెడుసైనా మనసులో వెళ్ళా రాయిలా ఉన్నవాడిలోన దేవుడెవరికి తెలుసును నాకన్నా చూసేకి అగ్గిరవ్వ మాదిరే ఉంటాడే నా సావే పత్తి పువ్వుల మరే సంటాడే నా సావే நாடின் நன்மகனே பொன்மகனை முத்தாயவனே இன்னும் சூரியனும் சந்திரனும் நன்னாயவனே காலம் வந்து வச்ச ரட்சகனே சிம்ஹாரகனே எங்கள் கண்ணனை வந்தவனே பயமே மாறிப்போனி அண்ணன் கண்களுக்கு நெல்ல இருட்டில் சிட்டி வாடும் ராஜாவுக்கு எல்லாரும் சொல்ல இவனை தொழுவானா என்னும் ஜனத்திலக்க காலம் எடுத்து வச்ச சொர்க்கம் போலும் மன்றம் பெற ఆరింటికోసారి ఏడింటికోసారి ఉండదు పదింటికోసారి పడుకుంటే ఓసారి మెలుకుంటే ఓసారి ఏమి కోసం కూర్చుంటే ఓసారి ఏళ్ళు నక్కుతుంటే ఓసారి ఓసారి కాళ్ళు తొక్కుతుంటే ఓసారి ఓసారి వచ్చుండాయి ఫీలింగ్స్ వచ్చుండాయి ఫీలింగ్స్ వచ్చి వచ్చి చెప్పేస్తున్నాయి ఫీలింగ్స్ Very good morning to respected principal sir, teachers and my dear friends. I am Swasti Mittal from class 10th Haven to share my experience about my school. Today is not only farewell, but it's a moment to reflect on the journey that has shaped us. School was never only about studies. It taught us about discipline, courage, confidence and values. Our teacher guided us with their patience and dedications, helping us grow into better individuals. To my friends, thank you for making these years memorable with your support and laughter. As we leave today, we carry just not only memories, but spirit and lessons of this school forever. Due to respect to Principal Sir, I would like to ask for his permission to present some token of appreciation to our teachers. Sir, may I? Thank you, sir. Today, as we stand here at the edge of a beautiful chapter ending, we realize that how lucky we have been. Some teachers don't just teach subjects, they teach belief, values, and patience. This gift is not from one person only, it's from a team that works with love, laughter, and a little effort. I would like to invite a group who contributed in creating this gift, especially for our class teacher, Miss Seema ma'am, to please come on the stage. Seema ma'am, our class teacher, our constant, and our calm in the storm. You didn't just manage a class, you manage emotions, ambitions, and a room full of opinions. This gift is small in size but heavy with respect and gratitude. Thank you, ma'am, for believing in us. Firstly, I would say that our attendance was not always perfect. But thank you so much, Seema ma'am. You always survived us, stay calm, and always appreciate us. Thank you so much. Please give a big round of applause. Thanks to all. Thank you so much, Bula. As one chapter ends, the another name also deserves spotlight. A teacher who turned ideas into innovation. Now, I would request Amandeep sir to please come on the stage. Give a huge round of applause. And I would also like to
call Gunjan and ask on stage. Thank you so much everyone, especially class 10th A1. There is one thing that I want to say to you all, but there is a word called beautiful that I want to use that may not sound appropriate for, especially for Gen staff and you boys, but this is not a grammar class. So make a note, take it with you all. You are more than you know. You are more than you think of yourself. Whoever you are, wherever you are. You are beautiful as you are. Thank you so much. अब वो मोमेंट जिसका सबको इंतजार था. Yes, games with our respected teachers because teachers भी फन कर सकते हैं. So for today's games, I like to invite all the class teachers of class 10th. Look, तो भी गेम कुछ ऐसा है, माइक मैंने आप रखा हुआ है. I have some questions for you. जैसे बच्चों को मन में होता है कि टीचर ही पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनके मन में भी क्वेश्चन होता है कि कोई टीचर से भी क्वेश्चन पूछे. तो आज का गेम इसी पे है, कुछ क्वेश्चन आंसर्स पे है. तो यहाँ पे आपके सेंटर पे सोफे पे एक माइक रखा हुआ है, ठीक है. मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा स्टार्टिंग विद जिनके आंसर्स एंड करेंगे एल से, ला से. ठीक है, आंसर्स एंड करेंगे ला से. तो whoever get the first answer can go and sit, take the mic and take the answers. Okay, ठीक है. चलिए मेरा पहला क्वेश्चन है, रेडी रहिएगा सर. क्वेश्चन इजी है, एकदम भाग के जाना पड़ेगा, आप तो फिर केसेस शो को दबा देंगे. चलिए क्वेश्चन है, ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन इज, पूछने के लिए क्या करते हैं? पूछने के लिए क्या करते हैं? व्हाट इज आंसर? पूछने के लिए क्या करते हैं? अरे हेल्प नहीं करनी है. इसका आंसर एंड करेगा ला से. यस, क्लास प्लान टीचर्स वहां बैठे करना है. लीना मैम, टेक द माइक. माइक लेना, माइक लेना, माइक लेना. बैठ हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन द आंसर इज एंड विद ला. ठीक है. पानी का दूसरा नाम? सर यहाँ नहीं देना है, माइक पे देना पड़ेगा. टेंशन नहीं है. आज से मैं भी फिटनेस दिखा दी. अरे थोड़े पहली बात मैं क्लास टीचरों से सवाल किया जा रहा है और तुम जवाब दे दे रहे हो. चलो चलिए अगला क्वेश्चन है. आंसर मैं आपको पहले बता दें, एंड में ला से एंड करेगा. एंड द क्वेश्चन इज, जहां इलाज होता है. बहादुर सर, माइक पकड़ के देना, बैठ के. इतना बड़ा सोफा मैंने लगवाया इसलिए. बाद में ये ना कहीं मुझे चांस नहीं मिला, फिर चांस. अगर माइक को पकड़ बैठ, यहाँ मेरा माइक. चलो, जो बहुत बड़ा है तो डरावना ना हो. जो बहुत बड़ा हो तो डरावना ना हो. सर माइक पकड़ के बैठ के बोलना है. आंसर बोलिए सर. विशाल. वेरी गुड सर. विशाल जोशी खुश होगा 10th में. चलिए चलिए लाओ वाले क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए. वर्डिंग चेंज करते हैं. नाउ द क्वेश्चन चेंज एंड द आंसर विल नाउ एंड विद ना. स्कूल जाने से क्या मिलता है? अरे दूसरा भी तो कह रहे. रेडी ना? वैसा आंसर क्या मैम? एक सेकेंड. ज्ञान. ये सीनियर कोऑर्डिनेटर ने दूसरे कोऑर्डिनेटर की हेल्प कर दी है. आंसर कुछ और था क्या? यहाँ सर ये स्टाफ चल रहा आपका दोनों का. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विभाग सर आपका भी नंबर नहीं आ रहा. चलिए तो ध्यान से विभाग सर आगे आ जाए. केसा सर फिर आप ध्यान से सुबह पढ़ लेते हो. नहीं सर आप इधर आओ. ऐसे ही चलेगा. विभाग सर पेज चांस नहीं मिल रहा. नहीं सोफे के पास रह जाओ. इधर माइक छीन लेना सबसे पहले. आंसर गलती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेडिटेशन में क्या लगाना पड़ता है? अरे गुड नाइट सर, मुझे नहीं बताना. वहां माइक पे बैठिए. ऐसा आंसर नहीं हुआ.
ध्यान। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट, सुबह उठकर हम क्या करते हैं? डांस। ध्यान। वेरी गुड सर, मेरे डांस सुनाई दिया, मेरे डांस करते हैं वैसे सर, डांस बोलते यस यस, वेरी गुड सर। ठीक है, ये जवाब बड़ा अच्छा है, सुनकर अच्छा लगा आपको क्वेश्चन। जिसे कंट्रोल करना मुश्किल है, जिसे कंट्रोल करना मुश्किल है, एंड द आंसर एंड्स विद ना। जिसे कंट्रोल करना मुश्किल है, ना 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 ना, शैतान भी एक तरह से काइंड ऑफ कह सकते हैं, लेकिन वो कुछ और चीज आंसर है, आंसर ही नहीं है। हाँ नहीं आंसर नहीं है, आंसर का है। मैं काफी स्ट्रिक्ट हूँ अपने आंसर को लेके। ओके। मुझे मेरा आंसर ही चाहिए। यही हिम्मत किसी बच्चे ने दिखा दी होती किरण सर के सामने, तो क्या होता आज बताओ? जिसे कंट्रोल करना मुश्किल है, जवान। वेरी गुड सर। अब थोड़ा लेडीज सेक्शन में आए, तो मैम थोड़ा मैथ का सवाल पूछ लें, क्योंकि देखिए मैम ऐसा है, जब मैं 9th-10th में था तो मुझे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस बड़ा डर लगता था। पता नहीं कि मुझे याद नहीं होता ना क्या होता था, पर मैथ में था मैं थोड़ा बहुत। तो मैं अब चाह रहा हूँ कि जो परेशान मुझे 9th-10th के टीचरों ने SST में डांटा है, तो मैं एक आध सवाल मैथ का ही पूछ लूँ SST वालों से। पूछ सकते हैं मैम? थोड़ी सी कैलकुलेशन चेक कर ले। चलिए, 1040 प्लस 1040। 1040 प्लस 1040, 2080। वेरी गुड, वेरी गुड। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग वर्ड आने वाला, कोई आंसर ना दी। कितना बताया आपने? 2080। 2080, ठीक है। प्लस 10? प्लस 10 2090। वेरी गुड। प्लस 10? 2090, 2100, 3000। वेरी गुड, मैम का आंसर आया 3000। 2090 प्लस 10, 3000। थैंक यू मैम। वी हैंड ओवर द गो। मैं आंसर पे वेट कर रहा था बस। चलिए। The stage is again ready for another wonderful performance. ये परफॉर्मेंस सिर्फ डांस नहीं है, ये एक्सप्रेशन ऑफ मेमोरीज, फ्रेंडशिप्स एंड अ फेयरवेल स्पीच. Please enjoy this energetic dance by class 10 group 2, spotlighting confidence and teamwork. जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटे पर जाके बोल। लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटे पर जाके बोल। मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, अरे लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, कोई ना जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। होठ घुमा, सीढ़ी बजा के बोल भैया अरे भैया अरे चाचू अरे भैया बड़ी फंकी करे है नौटंकी, ये छोरी बड़ी ड्रामा क्वीन है। बड़ी बड़ी आंखें हैं आंसुओं की टंकी, ये छोरी बड़ी ड्रामा क्वीन है। बताए बड़ी फंकी करे है नौटंकी, ये छोरी बड़ी ड्रामा क्वीन है। बड़ी बड़ी आंखें हैं आंसुओं की टंकी, ये छोरी बड़ी ड्रामा क्वीन है।
क्या दूं के पुराने एल्बम में बचा के रखे हैं हमने वो दिन, गुल्लक में पड़ी जवानी सी छुपा के रखे हैं हमने वो दिन। यार बाबा ने डॉक्टर बनने को बोला था यार, मुझे तो इंजीनियर बनने के लिए बोला है। किसको पता कि हमारी मंजिल है कहाँ? ये है मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमाए है। कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ना 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 na 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 na. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. Na 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 na. दूर जितना भी तुम मुझसे पास थे मैं, उधर को आदत सी है मुझको ऐसे जिए में। हे हे नाउ क्लास 10th, इट्स योर टर्न। ठीक है, अभी तक हमने आपके टीचर से गेम खेला था, अब आपके साथ स्टार्ट करेंगे। सो बेटा नाउ द गेम इज लाइक दैट कि एक गाना बजेगा, आप सब शायद जानते होंगे इस गेम को। एक गाना बजेगा और उस गाने से रिलेटेड प्रॉप यहाँ रखा हुआ है, आपको प्रॉप बहुत ही जल्दी जो पहले उठा लेगा वो जीत जाएगा। ठीक है, नाउ इट्स गर्ल्स वर्सेस बॉयज। ठीक है, नाउ स्टार्ट द गेम। Yes, girls start with the point. Hans, beta कटारी नाक. Next. सीट पे आइए जाइए। हार गए? हाँ हार गए बेटा। यही। थोड़ा पीछे बेटा। चल लाइट पिट। क्यों बेटा ये गाना थोड़ा लेट पिक करा, थोड़ी ट्यूनिंग लंबी थी, सॉरी। गाना था मोह मोह के धागे, थोड़ा लेट आ गया सर, कोई बात नहीं। हमारा बेटा जो जीतते जा रहा है अपना इक्विपमेंट लेते जाओ, बस एक दो इक्विपमेंट हमारे हैं वो वापस कर देना। ठीक है, नेक्स्ट सॉन्ग प्लीज। छोड़ के गुंडा गर्दी शरीफ तो अड़ क्यों ना जाता, हर बार मैं गर्ल्स इज द विनर। हाँ फिर से बेटा ये हमारा है। नेक्स्ट सॉन्ग प्लीज।
चलिए संकल्प, डोंट बी टू सीरियस, गेम ही है। ये स्पीकर वापस कर देना प्लीज, प्लीज। आदिल नहीं करोगे, ये लड़के टाइम लगा रहे हो क्यों? रोहन ध्यान से। प्लस यस यस, यू कैन टेक। कुछ इक्विपमेंट है जो आपको वापस करना, अदरवाइज आप जो जीतेंगे वो आपके साथ ले जाएंगे। हील 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 तो नीचे रह गई। ठीक है, हाँ ये मैं नहीं लेके जा रहा। मैम प्ले द सॉन्ग क्विकली थोड़ा स्किप कर दीजिए। हाँ नैतिक जीत गया भाई, जमका दे दो बड़ा, नैतिक जमका तुम्हारे लिए। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। गुंजन बॉयज आते हैं बेटा, ग्राम उठाना सॉन्ग चेंज करवा देते हैं। सॉन्ग चेंज कर दिया, मिर्ची को खा दो। कर दिया। वेरी गुड अनुराग, तुमसे उम्मीद थी मुझे बेटा। चलिए बेटा, चलिए खत्म होते हैं। मेरा एरिए च और कुड़ी दा ना तन मंगी तेरा ही टाइम चक्कीए गड्डियां बुलाए के चलती ऐ तेरे अपनी शाम नू बड़ा जाने सवाज अपनी तू अज बिजी तेरा यार जल्दी है माजे दिए ओ बत्ती है। यस बेटा, only 3 are left, 3 or 4 sorry। Yes. पास आओ तो कहना जाए जरा पास सितारे लपेटे हुए सितारे तो जाने तमन्ना किधर जा रही हो जरा पास आओ बस तुम्हें पार्टनर नहीं बचा तो मैं ही आ जाता हूँ एज अ होस्ट। तुम्हें चांस दिए पहले। Okay, 10th Evan. First give your intro. Girls. A very good afternoon, respected principal sir and everyone. I am Sanjana Kaushik from class 10th Heaven under the guidance of Miss Seema ma'am. Good afternoon to everyone, respected principal sir, teachers and batchmates. My name is Gunjan. I am from class 10th Heaven and I am presented here as a capable candidate of Miss Farewell. Thank you. A very good afternoon, sir, and all of you, all of my peers, and myself Muskan.
Good morning to all. My name is Aryan Singh. I am from class 21. First of all, I like to say thank you to select me as to give me this opportunity to be a Mr. Favorite of our school. And thank you. Namaste and good morning to our respected principal sir, our lovely friends and our teachers. This is Anshuhan from class 24 with his Tutti Frutti English. Good morning all of you, myself Ajit, respected principal sirs and honorable teachers and my dear friends. Good afternoon to all. Myself Ajit Chaudhary and I am from 10th A4. Okay, now some of the candidates has to leave the stage. Girls from 10th A2, both the girls can leave the stage. From 10th A3 also. In boys, 10th A3 boys can leave the stage and 10th A2 boys can leave the stage. Okay, share a moment when you first joined the school. From the girls, Sanjana. So when I was very young, I was scared, I was shy, and I was little nervous. I joined this school from class first, but today I am leaving as a very confident and a grown-up child. I entered this school when I was in class 3rd. Well, I was very clueless, I didn't know anything, and also I was very underconfident that time. The girl you are seeing standing here wasn't that same confident when she was in class 3rd. But over the years, this school turned me into something, or we can say a leader, who doesn't even talks with confidence but also believes in herself and leads with truthfulness. Thank you for that. So when I joined this school, I was in 9th class, and in first day I was feeling very nervous when I entered in class. But after a few days, I feel very friendly to teachers. Thanks to all teachers who supports me and all my friends also. Thank you. Okay. When I joined this school, I was in class first, and my father used to pick me up, and I was crying at the first day, very nervous. But now I really appreciate the efforts of my teachers that I am really confident, and I was chosen to be Mr. Favorite. I joined this school in 8th standard. On my first day, I was very nervous as I was a late student and started the school late in, I think, in June. And I was little too nervous for a student to be. And then I met Mahima ma'am and all the lovely teachers. They really supported me. And through they only didn't teach a subject but also the moral values and how to think, how to respect our elders, and how to work under pressure and really improve what I am studying here. Girls from 10th A4, they can take one step forward. Both of them, 10th A4 girls. And here the 10th A1 boys will take one step forward. So from the girl who has taken one step forward can leave the stage. And from the boys who has taken one step forward, the right candidate from the my side will be in the stage and left candidate can leave the stage. And from the back side, the same thing. Now Gunjan, I have one question. That what do you think about the reservation? As we have the reservation in job, in exam, so what do you think about that? First of all, if we repeat history, then this caste system was created for just some years to stabilize, or you could say to create some sense of equality in our nation. But over the years, government has, increased the tendency of this situation of reservation with caste system. But in my opinion, as an opinion, not a fact, in my opinion, I would like to say that for me, reservation in caste system is wrong, because I think that you should be capable and one should win something on basis of their capability, basis of their talents, basis of their hard work, not on some caste, religion or something. Thank you, sir. Okay. Sanjana, as we have the two bifurcation for the jobs and for anything we have, like always we are saying that ladies first. Okay, and we have the two lines that ladies can get some privileges from anybody, and when we are putting form somewhere, then there are the reservation for women also. So is it good that we are bifurcating the women and men? No sir, it is actually not. I don't think sir that this is good. I think that everyone should get the chances according to their
capabilities, according to their knowledge. I don't think that this is a good way. This is creating a type of discrimination. If we think about from the point of view of boys, this is actually wrong. I don't think that girls should be given respect like this. But I think that girls deserve more. I think they should do by themselves, not as a chance. I think that they should do by themselves. Okay. Aryan, the same question is for you. Women and men. As I asked to the Gunjan, what question I asked to the Gunjan? So you asked about the reservation. Yeah, so explain that it also again. If you ask me, in my opinion, reservation is not a bad thing. First, we have to understand why reservation was created. It was created so that the lower sections of the society can apprise their status. And if we see right now, people are using reservation in a wrong way. I think people who really need the reservation are not able to get a reservation. They are not able to get the benefits of that. So first we should focus on the people who really need that thing to improve their status in society and really do something with their lives. And reservation is not a bad thing if we ask, in my opinion, but right now it is not a good thing for the journal peoples and the overall. As per your thing, we can give the reservation to EWS, economy weaker section only. Yes, sir. Okay, not by the caste. Yes, sir. Okay, thank you. Okay, sir. Again, please take a mic, Gunjan. If you will be the Chief Minister of Uttarakhand, so what you want to be applying to Uttarakhand to make it good in all the states? Okay, so like good opportunity. So if I became the Chief Minister of Uttarakhand for like one day, or if I became the Chief Minister of Uttarakhand, then first of all I would like to tackle up the clean sanitation of our state. As per my observation, I don't think there is as per much work of sanitation as in other states, or you could say Uttarakhand is not that much clean. If I have to work on other things, then it must be on, you could say, traffic, because we have seen that there are a lot of traffic in many places which sometimes creates problems. I would tackle that also. But besides that, my most top priorities would be sanitation, transportation system and equality also. So these are the things that I will work up if I became the Chief Minister of Uttarakhand. Thank you for the question, sir. Okay, thank you. Sanjana, if you will be the principal of this school, then what you want to do? Sir, by the way, in my opinion, I think that the school is really best. I'm not saying like I am standing here, that's why I'm saying this. I think my school is very best. But if I get the chance to change something, so I would say that I would create a new platform for students where they can share their feelings, their emotions to teachers. I would create a platform where everyone get a chance to shine even more brighter. Thank you, sir. Okay, thank you. Aryan, Yes, sir. if you will be the Prime Minister of the nation, then which type of command you want to pursue for all the Chief Minister of our states? Sir, first of all, it will be very great opportunity to get a Prime Minister for our country. And if I become a Prime Minister of our country, first of all, sorry sir, but I will replace democracy to dictatorship for only 5 years, because I think the nation needs dictatorship for some time. Because people forget their rights and importance of democracy. If we get democracy, I will also do my efforts and all work as I can do, and also people then realize what is the importance of democracy. Thank you. Thank you. Ajit, if you will be the Chief Minister of the state, then which type of command you want to give to the MLAs? Sir, first thing I would include is transparency. Like transparency, people should know where the money is going on, their taxes. And second thing that I would do is to improve the education system, because youth is the new generation and it will shape the future of this country. And
If the youth is educated, they will know how the government is working and will ask questions. That's the most important part. They will control how the government is functioning and see the overall view of the government. Thank you. Now make it two group. Aryan and Gunjan should together. Sanjana and Ajit should together. Sir, as per my opinion, I would like to say that yes, he was right at all the thing. It was his opinion, and for my side, it was also right. But there is always some sense of improvement if we see further. So for me, it can be improved. But yeah, he was right. Okay. Ajit, what do you think about Sanjana? Whatever the answer she has given. Sir, Sanjana's all answers were correct in her opinion. But I really wanted to ask her one question. If she is the principal for one day and has a lot of power, she could done a little more than she said. Okay. Sanjana, what do you think that Ajit has answered all the things correctly? Yes, sir, it would be, because as he said that in the reservation question, he said that all are equal in this world. I think that he is correct. Okay. So what you all, we have two groups here. I'll give my opinion that what I list. But let me see if we want to go for the hooting for the group Aryan and Gunjan, then let me start the hooting from 10. Start. Do you have some hooting that you want that there can be a Mr. and Miss Farewell of this school, this session? Anybody can do that. They can shout for them. Again, I'm asking. Now we are changing that. First, we are asking for Ajit and Sanjana. How many want to see them as a Mr. and Miss Farewell? And to Aryan and Gunjan? Chale, we have a little sound, but I think from my opinion, I wish to select the member who has given the answer confidently, and definitely all the answers given by all the participants are good, and even that before how many students were standing here we have seen, so they all are correct. They all are Mr. and Miss Farewell of the school, and as the answer said कि अभी ना जाओ छोड़कर, so we always say that कभी ना जाओ छोड़कर. Okay, you always here in the heart of us, and you all are Mr. and Miss Farewell for us, Mr. and Miss SSPF for us. But we have the a ritual that we have to choose a one pair. So I'm going with the Aryan and Gunjan. Good afternoon to all. Congratulations to Mr. and Ms. Farewell who got the position. And from my side, you all are the part of congratulations that you have completed your class 10th academic year from here, and now you are ready for your exams. And definitely the farewell is a word only, but we can't give the farewell to you all. You're always here in the heart of your teachers, in the heart of the members of this school. From the beginning, when we are thinking about your farewell, then we thought that we are not going to give the farewell to class 10. Is it? I think we thought that class 10 teachers know about that, because something happened when we started our annual function preparation. So some of the class 10th students have not supported the students, to the teachers. But as always I am saying to you all, that in a teacher, in one heart, always two members are there, mother and father. So being a father, I am not ready for this function.
cause father want to make the discipline among their children. So we want to see the discipline among you all. So this is the half part of our self, half part of the teacher, which is you can say father. But another one, mother. So when we have seen the mother part of our heart, then definitely mother always said कि माफ कर देते हैं. So what we thought as a mother कि चलिए हमारे बच्चे हैं जो भी किया, लेकिन जब यहाँ से जाएंगे तो याद हमें भी आएंगे, तो उनको क्यों ना एक ऐसी विदाई दी जाए कि वो लोग याद रखें. So we thought that we should go with the farewell, and I think you all have enjoyed it. So what we want that always should be disciplined and always be caring for your persons who are standing with you, who are caring for you. Maybe these are your parents, your guardians, your teachers, your school. Whatever we are saying over here in the school, we are always scolding you to see if you are doing something bad. But there is a one sweet feeling of ours that we want you should take a high jump always in your life. You have to touch the sky. Whatever we want to be in our life, we are. हमने जो सोचा था हम बन गए, बट जो सपने हमारे अधूरे रह गए, ये आपके पास है, क्योंकि आप वो बन पाएंगे या नहीं. जब आप वो बनेंगे, then we thought, now we become successful. I want from yourself कि कोई आप में से DM SDM भी बने, कोई आप में से डॉक्टर भी बने, कोई आप में से इंजीनियर भी बने, and if you want then you can join the teachingship also. This is also a typical profession right now. So I wish you all again for your exams that you will get good percentage in your board examination. और ऐसे जैसे आप हैं ऐसे ही हंसते रहें. I want the naughtiness always, but not nonsenseness. Okay? So be naughty and be happy. Thank you very much. عندي خوش فاصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي تفوز عندي خوش فاصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة हवा हवा ऐ हवा खुशबू लुटा दे कमर खुली हथुली दिल को बता दे अब उसका पता दे जरा मुझको बता दे मैं उससे मिलूंगा एक बार मिला दे यार मिला दे यार मिला दे गिरीश का सुनने का गाना गिरीश का सुनने का तो नहीं यार क्या कर रहे हैं हम ऐसे नहीं एक पर्सनालिटी है यार स्टाइल है एकदम हीरो टाइप फिर से बोलो दादा चलते तो मास दादा हिलते तो मास दादा देखे तो मास मम्मा मास फिर से बोलो इसकी पैंट भी है मास इसकी शर्ट भी है मास इसके मसल में मास ये है मास देख लो तुम भी गाओ ना दादा प्रॉब्लम है अंदर सॉल्यूशन है तुझे मेरा वाला डांस ये है मेरा वाला डांस बनाजू ये है मेरा वाला डांस बनाजू मेरा वाला डांस
बाहर है क्या झूठ बोलती है? सज के सावर के चपला गेलू रानी दिनवे में मनो का बना गेलू राती में सपना तू अपना देखा के हमरा के कहे तू बना गेलू जब कोई लपिया तू मोटा जइबा हो में हरी के हाथी का कोटा घूमे खातिर गाड़ी हीरो होंडा खोजेगी अरे घूमे खातिर गाड़ी हीरो होंडा खोजेगी जब से चढ़ल बा जवानी मुझे मुंडा खोजेगी जब से चढ़ल बा जवानी मुझे मुंडा खोजेगी घूमे खातिर गाड़ी हीरो होंडा खोजेगी अरे घूमे खातिर गाड़ी हीरो होंडा खोजेगी जब से चढ़ल बा जवानी मुझे मुंडा खोजेगी जब से चढ़ल बा जवानी मुझे मुंडा खोजेगी तेरा आना तेरा जाना तेरा सबसे बाहर गाना तेरी हेलो तेरी हाय तेरी कॉफी तेरी चाय तेरी नैनी तेरी कुर्ती तेरी डांस फ्लोर पे फुर्ती तेरी बातें तेरी झलकी The stage is empty now. The decorations have come down, and it may feel like the story ends here. But as you walk out of these gates, we want you to remember that your future is important, but your today is just as important. So, study hard, work hard, and play even harder. Don't be bound by the rules that stop you from becoming who you truly are. But at the very same time, never hurt anyone along the way. Never grow up so much that you forget to dream, and never ever live somebody else's dream. Because life will not always go the way you expect. You will go wrong sometimes, you will fail sometimes, and there will be days when the world feels like it is working against you. But remember this, at the end, everything is going to be alright. हिंदी फिल्मों की तरह लाइफ में अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है, और अगर ठीक ना तो अंत नहीं, पिक्चर अभी बाकी है।